नाउ स्लोली करते करते हमने इसको इंक्रीज करते गया। मैं इंक्रीज करने का वजह क्या है? हमारा ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट्स क्या था? जेम्सन ज्वेलरी थी, पेट्रोकेमिकल्स थी, और कुछ मेडिसिन था, एंड वी हैड our own other handicrafts, blah blah blah. Now the number of products जो export हो रहा है वो बढ़ गई, not from the famous centers like Delhi, Noida, Gurgaon, or Mumbai, Hyderabad, Chennai, and Calcutta. Even Meerut is contributing. Forget about Meerut. I'm talking about Mizoram. I'm talking about Manipur, something unheard of. You know, मिजोरम और मणिपुर से फिग्स एक्सपोर्ट होना शुरू कर दिए। एंड हाउ पॉसिबल? बिकॉज गवर्नमेंट ने एक कानून इंट्रोड्यूस किया था, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन। जस्ट लाइक ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर गिवन टू इंडिविजुअल और अ पर्सन, लाइक पेटेंट जो इनोवेट करता है पर्सन उनको मिलेगा, कॉपीराइट जो लिखता है फिल्म बनाता है उसको कॉपीराइट मिलेगा, एंड देन जो ट्रेडमार्क जो सर्विस मार्क और द प्रोडक्ट मार्क है वो उसको मिलेगा, एंड डिजाइन सिमिलरली इंडिविजुअल मिलेगा। बट ओनली द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ये ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड ग्रुप ऑफ ग्रोअर्स को मिलेगा। फॉर एग्जांपल जो दार्जिलिंग टी जो प्रोडक्ट उधर खेत में बनाता है असम में, जो हो गए 1000 फार्मर्स होंगे, जो 1000 किसान हो गए जो उगा रहे होंगे उधर चाय दार्जिलिंग, वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनको प्रोटेक्शन मिलेगा, नॉट वन इंडिविजुअल। सिमिलरली आगरा का पेटा है, जो आगरा का पेटा है, जो 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 पेटा बनाने वाला बिजनेस जो आगरा में है वो रजिस्टर करेंगे, हमारा ये एसोसिएशन है, हम ही लोग बनाते हैं, इसके अलावा कोई नहीं बनाएगा। सो हैदराबाद में जो पेटा बनाने वाला ये नहीं क्लेम कर सकता ये आगरा का पेटा है। ऑफ कोर्स मैं आगरा का पेटा इधर खरीद के जाके हैदराबाद में बेच सकता, ओके, बट मैं हैदराबाद में एक दुकान लगाकर पेटा बना के आगरा का नाम नहीं ले सकता, बिकॉज दैट इज द मेन intellectual property of the Agra people who are manufacturing that peta. So similarly Kanchipuram sari, Benares sari और गोवा फेनी, सो हर एक डिस्ट्रिक्ट का एक प्रोडक्ट ऐसा होगा वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, इवन दो उत्तर प्रदेश में दूसरी एरिया में वो प्रोडक्शन नहीं होगी, मैन्युफैक्चर नहीं होगी, सिर्फ मेरठ में होगी। ऐसा चीज को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन करा के एक टैग देके, जो कि भाई ये पूरा इंडिया भेजे, ओनली मेरठ के लोग उसको इंडस्ट्री फायदा में आए, उसके इकोनॉमी बढ़े, उसका कंट्रीब्यूशन टू द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी बढ़े, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, एंड आल्सो एक्सपोर्ट्स बढ़े। सो मेरठ की व्हाटएवर जो जीआई टैग वर्क्स है वो पेरिस में मिल रहा है, अफ्रीका में मिल रहा है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, अमेरिका में, and Europe में, everywhere these products are there because no one can copy it. जो जयपुर की बंदा नहीं बोल सकता ये आगरा का पेटा है, वो बीकानेर की प्रोडक्ट्स में भी अलग होगी, उसको अलग जीआई टैग मिलेगा, मगर आपका आगरा का पेटा चोरी करके वो जयपुर में बना के वो नहीं बोल सकता कि भाई आगरा का पेटा है। सो वो जो आगरा का जो स्वाद है, जो इंग्रेडिएंट्स है, वो जितना भी कॉपी करे जो वो नाम कॉपी नहीं कर पाएगा, सो वो रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा। सो ये इनोवेशन हो रही है। नाउ आई वाज टॉकिंग अबाउट द कोविड वैक्सीन, ये ग्रेट इनोवेशन हुआ है। सो इंडिया को कहा जाता है, इंडिया इज फेमसली नोन एज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। कैसा हुआ, कैसा मुमकिन हुआ? अमेरिका इतना बड़ा कंट्री है, रिच कंट्री है, उनके सारे मल्टीनेशनल इंटरनेशनल फार्मा कंपनीज उधर से आते हैं, जो दवाई बनाते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, मेडिकल डिवाइसेस बनाते हैं, हर तरह की बीमारी का। हाँ, वो आके हमको इंडिया को पूछा कोविड शुरू है तो मोदी साहब हमको जो मलेरिया का दवाई है ना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, उसकी इतना टन्स की दवाई दीजिए। क्यों पूछा? बिकॉज हम पॉलिसी क्या है,
हम जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं। ये जेनरिक मेडिसिन विच इज इक्वलेंट टू अमेरिका का कंपनी जो फाइजर और मोडर्ना बनाती है, और गिलेड बनाती है, और नोवार्टिस और बेयर यूरोप की कंपनीज बनाती है, ऐसे ही बायो सिमिलर होता है, बायो इक्वलेंट होता है और थेरापेटिकली इक्वलेंट होता है। जो आप 1,000 रुपए का एक पत्ता खरीद लेना, मल्टीनेशनल पेटेंटेड प्रोडक्ट, 10 गोली होता है एक पत्ते में, 1,000 रुपए। इसी को इंडियन कंपनी बनाता है, ये जेनरिक प्रोडक्ट, ओके। उसको कॉपी नहीं करेगा, उसका चोरी नहीं करेगा, ये अपना इनोवेशन बना के सेम केमिकल फॉर्मूला, सेम थेरापेटिक, सेम इफेक्ट ऑन द डिसीज, 100 रुपए में पत्ता बनाएगा, ओके। यही 100 रुपए वाला पत्ता मेडिसिन बनाते बनाते इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड में, हर वर्ल्ड में सारे कंट्रीज इंडिया के पास आते हैं, भैया आपका जो मोस्ट इफेक्टिव चीपर मेडिसिन हमको दे दो। सो अमेरिका ने भी पूछा, आपको जो 25 रुपए में एक पत्ता मिलता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो दे देना। वो 10-15 रुपए में मिलता है, व्हाट इज दिस, पैरासिटामोल के पत्ते, यू नो, पैरासिटामोल और डोलो के पत्ते जो कोविड पेशेंट को देना है। Initially, COVID treatment started with these two medicines, and then later people are going and moving to किसने बोला प्लाज्मा थेरेपी बनाओ जो कोविड पेशेंट का निकाल के, और किसी ने बोला स्टेरॉइड्स यूज करो, और किसी ने बोला रेमडेसिविर यूज करो। रेमडेसिविर एक्चुअली कोविड का दवाई नहीं है, वो और एक वायरस का दवाई है। सो डॉक्टर्स एक्सपेरिमेंट करने लगे, हम लोग पागल होते चले। डॉक्टर बोलने से पहले हम मार्केट में जाके खरीदना शुरू किए, ब्लॉक मार्केटिंग करना शुरू किए। नहीं, ये बहुत गलती है। सो ये सारे स्टॉप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी साहब इनोवेशन इंट्रोड्यूस किया। ये हैदराबाद कंपनी भारत बायोटेक आगे आके कोवैक्सीन वैक्सीन बनाया, एंड हमने ब्रिटिश के एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड कंपनी से एक लाइसेंस लेके सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के साथ कोविशील्ड बनाया। हमारा एक लोकल एक दवाई बन गई, बहुत बढ़िया। इवन WHO यूरोप भी बोलती है जो हमारा कोवैक्सीन जैसे वैक्सीन कोई नहीं है, बिकॉज ये नया नया वेराइटी आ रहा है म्यूटेशन होके वायरस का, उसको भी फाइट करने का इसका ताकत है। सिमिलरली कोविशील्ड है, ये किया। बट आप पूछ सकते हैं, आपने पूरा दुनिया में बहुत बड़ा नाम है, फाइजर का mRNA वैक्सीन क्यों नहीं लिया, मोडर्ना का क्यों नहीं लिया? इसीलिए हमने भारत सरकार ने मना कर दिया। फाइजर ने कहा, कंडीशंस उसका कैसा पता है, फाइजर का इंजेक्शन लो, ऐसा है कि कुछ रिएक्शन होके बंदा मर गया, पर्सन डाइड। फाइजर ने बोला हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, भारत सरकार। दवाई कौन बनाया? भारत सरकार ने नहीं बनाया, फाइजर उसने बनाया, मगर बोलते हम नहीं रेस्पॉन्सिबल है, अगर कोई रिएक्शन हुआ मर भी गया। और इसके अलावा कंट्रैक्चुअल कंडीशन में ऐसा लगा कि वो इंडिया का बॉस बन जाएगा, इंडिया में कहीं भी घुस जाएगा, कुछ भी करके जाएगा, हम कुछ नहीं बोल सकते। अरे भाई, इंडिया में एक कॉन्स्टिट्यूशन है, एक रूल ऑफ लॉ है, एक रूल ऑफ लॉ हम डील करते हैं कानून मंत्रालय में है। आप कोर्ट जाइए, राजा हो रंक हो, न्यायाधिपति को जो डिसीजन करेगा इक्वल करना है। बहुत मल्टी बिलियनर है बोल के उनको रेप केस में उनको छोड़ दिया, मर्डर केस में छोड़ दिया, गरीब आदमी को अंदर डेथ पेनल्टी दे दिया, लाइफ इन, ऐसा नहीं होता है। एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। सो हमने माना नहीं, चलो भैया हम अपने ही खुद बनाएंगे, हमने बना लिया। नाउ वी आर एक्सपोर्टिंग टू द वर्ल्ड some of the best medicines we are exporting. That's why India is called pharmacy of the world. ये मुमकिन हुआ 1970 में। भारत सरकार ने कहा हमारा जेनरिक मेडिसिन प्रमोट करना है, ये पॉलिसी पेटेंट लॉज ऐसा लिखो कि ये जेनरिक प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन करे, इंडिया एक हब बने। नाउ टुडे इंडिया हैज बिकम ए हब। सिमिलरली सॉफ्टवेयर का इंडिया हब बने, बेंगलुरु से शुरू हुआ, आजकल हर एक प्लेस में इंडिया का सॉफ्टवेयर हब से। इट इज पॉसिबल बिकॉज हमने सॉफ्टवेयर पेटेंट ने नहीं दिया, सिर्फ सॉफ्टवेयर कॉपीराइट प्रोटेक्शन दिया। एंड देन जियोग्राफिकल इंडिकेशंस भी
मैं बताया. Coming to the major communication part, जो when you make a write a book, who will get a copyright? Copyright is a original expression which is written in a particular form. Now, please, now the next 10-15 minutes going to be more focused area and innovation for your mass communication students. So when you write something, automatically your idea is getting expressed and written and printed form. So idea per se copyright नहीं मिलेगा, जो लिखेगा उसको copyright मिलेगा. Now Vibor Gaur get an idea. He will ये आइडिया कमरे में बुलाएगा साहिल राणा को, उनको समझा दे. साहिल राणा बहुत चालाक है, अपने कमरे में चल के टाइप करके एक आर्टिकल लिख दिया. कल विबोर ने बोलेगा भैया मेरा आइडिया था, तुमने कॉपीराइट लेके किताब लिख दिया, उसके ऊपर आर्टिकल लिख दिया, नाम कमा लिया, पैसे कमा रहे और रॉयल्टी हो रहा है, मेरा शेयर दो. बोलेगा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा. एक्सप्रेशन किसका है? वो हिंदी में भी लिखे या अंग्रेजी में भी लिखे, उसका ग्रामर उनका है, सेंटेंस उनका है, वोकैबुलरी उनका है, एक्सप्रेशन उनका है, उसने लिखा. सुना होगा आपसे, आपका आइडिया सुना है, लिखा उसने, जिसने लिखा है उसको कॉपीराइट मिलेगा. जैसे आइडिया बोला है, आइडिया को कॉपीराइट. सिंपल, सिंपल. दिस इज द फर्स्ट रूल. देन कॉपीराइट किसको मिलेगा? नाम को नहीं मिलेगा. No copyright for names, no copyright for titles. A textbook on mass communication. हनुमंत राव साहब ने भी लिखा है, विबोर ने भी लिखा है, मैं भी लिखा हूं. मैंने पहले लिख दिया, मैंने कॉपीराइट कर लिया वो टाइटल, टेक्स्ट बुक ऑन फंडामेंटल्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. दुनिया में कोई नहीं लिखेगा विद दैट टाइटल. नो नो नो. दैट्स व्हाई. बट कॉपीराइट मिलेगा दो अंडर दो मैंने चैप्टर्स लिखा हूं, द लैंग्वेज लिखा हूं, द वेरियस कॉन्सेप्ट्स एंड field experience, whether empirical data, field data, and पूरा कलेक्ट करके एनालाइज करके लिखा हूं, और वेरियस सोर्सेस को प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेस लेके लिखा हूं. उसके ऊपर मेरा कॉपीराइट है. बट while doing so, whether I'm writing article or book, you have to respect copyright of others. If I am quoting a book of Hanumantarao Garu and article of Mr. Vibor Gaur, in my article or a book, मुझे clearly citation देना है. These 2 lines taken from such article or a book written by Vibor, article book written by Rao Garu. So entire citation including page number. If I have downloaded that work from that link I will provide. When I seen that last visited बोल के वो भी लिखते हैं. So otherwise क्या होगा? Plagiarism हो जाएगा. Plagiarism nowadays people think that जो भी इंटरनेट है मैंने कट पेस्ट कर दिया, हो गया मेरा वर्क. ऐसा नहीं होता. प्लेजरिज्म 2-3 तरीका होता है. एक नादान प्लेजरिस्ट होता है, तो सी ग्रेड प्लेजरिस्ट, वो एक किताब देख के अरे अच्छा है, पूरा उसको मक्की he will copy and simply change the title, put his name and submit it as a project report. So it is a single source plagiarism because एक ही किताब से कॉपी किया है. He must have jumbled it. पहला चैप्टर सेकंड कर दिया, सेकंड चैप्टर तीसरा कर दिया, उसको ऊपर नीचे कर दिया, थोड़ा सा इंटेलिजेंस दिखा के. Still is a plagiarism and he has copied entirely. And there are intelligent people who do multiple source plagiarism. They will read 100 books, 200 articles, pick up everything and put it. They try to pass on others' work as their own work, creativity, without giving any citation and reference which I refer to. It is a multiple source plagiarism. And third kind, most intelligent kind of plagiarism is ये बोलता है मेरे जैसा innovative mind ही नहीं है, because he has command over English language, the kind of expression he writes. Even the teachers like Hanumantarao sir will become surprised. क्या खूब लिखा है बंदा, ये लड़का. क्या phrases and language use किया है, vocabulary है, the way constructed the sentence, blah blah blah.
So he is paraphrasing basically already existing knowledge. जिसने लिखा है उसको सेंटेंसेस लेके पैराफ्रेज करके दिखा दिया, मैं इनोवेट कर दिया, मैं किसी का जरूरत नहीं है देने का, बट द बेसिक इंटेंट, basic ideas expressed in the original text, he is taking and paraphrasing it and presenting in a different English expression. उसके लिए नहीं भैया, आप you can't avoid citation because that is called plagiarism. Then there are other people, एक किताब लिखा है, सिस्टमैटिकली लिखा है, एक आर्टिकल लिखा है, उसी रिलेटेड सब्जेक्ट का अनदर आर्टिकल लिख रहा है या अंदर किताब लिख रहा है, अपना ही कॉपी पेस्ट करेगा. This is called self plagiarism. So he wanted to show that it is not only a new work, he doesn't want to give the citation to his own work. And problem, I tell you, let us say one professor has written an article on mass communication, latest innovations in mass communication. Let us say this is a topic. He got published in international reputed mass communication journal. What they ask for printing your article in that volume, that quarterly journal, they said you transfer your copyright. आपको जल्दीबाजी है भैया, मेरा बच्चे को देखना है प्रिंटेड योर आर्टिकल, तो आप वो ड्रॉप डाउन मेन्यू में क्लिक करके साइन करके दे दिया. सो यू आर ट्रांसफरिंग ऑल द राइट्स विदाउट रीडिंग. आपने कॉपीराइट इज अ बंडल ऑफ राइट्स. सो पब्लिशिंग राइट्स दे दिया, रिप्रोडक्शन राइट दे दिया, डिस्ट्रीब्यूशन राइट दे दिया, मेकिंग अवेलेबल ओवर इंटरनेट राइट दे दिया, ट्रांसलेशन राइट्स भी दे दिया. वो बंदा फ्रेंच में ट्रांसलेट कर देगा, जर्मनी में कर देगा, बंगाली, तमिल, असमी, सारे लैंग्वेज में कर लेगा. इकट्ठा आप सारे दे दिया. बट दिस यू कैन गिव सेपरेटली एंड अर्न मनी. यू आर नॉट राइट, ऑल गिवन. देन आपको एक कॉम्प्लीमेंट्री किताब पोस्ट में भेज दिया उन्होंने, कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी, यू हैव गॉट इट. देन what you have done, you are not able to download your copy from the web resource of that magazine because he has given you only read only facility. You have created a login and password. You can download it, read it, and open it and read. You can't download on your desktop. So everybody is asking, sir, आपका एक बहुत popular article है, in recent innovations in mass communication, please give me a copy. You are not able to do. Then आप समझोगे चलो यार जाओ, वो मान नहीं रहा है, मेरे पास फिजिकल कॉपी है, उसको फोटोकॉपी करूंगा, स्कैन करके अपलोड करके भेज दूंगा. The moment you have done, the journal has sent a legal notice to you. Why? अरे भाई मेरा ही आर्टिकल है, मैं किसी ने मांगा, मैंने फोटोकॉपी करके दिया, स्कैन करके मैं अपलोड कर दिया फेसबुक में, सब लोग पढ़े. गलती क्या है? मेरा आर्टिकल है. वो बोलता है नहीं भैया आपका आर्टिकल होगी, यू मे बी ऑथर, बट यू हैव ट्रांसफर्ड, यू आर असाइन द कॉपीराइट टू द जनरल. जर्नल ऑफ इंटरनेशनल मास कम्युनिकेशन हैज राइट्स ओवर इट. आप एक पैराग्राफ कॉपी नहीं कर सकते, अभी आप ही लिखा होगा, आपका भी एक्सप्रेशन होगा. So many people start crying, Professor Raghavendra ji हमको क्या कर रहे हैं, पता आपने क्यों दिया भैया राइट्स? You should have given only license to publish to him. Why you have transferred your rights? You should have not done. So you have to be very careful. And then your university mass communication के लिए, your student becomes a journalist in a print media, or he gets a job in popular news television news channel as an anchor. So all your professor faculty feel happy, अरे हमारा लौंडा न्यूज पढ़ता है 9 o'clock prime time का, बैठ जाते हैं जाके. Okay, and then उसको क्या पता होना चाहिए कॉपीराइट के ऊपर. So any print media में and electronic media में, news में copyright exceptions है. For example, हनुमंत राव साहब ने एक पॉपुलर किताब लिखा,
किसको लेट अस से बिग प्राइज मिल गया, तो उसको रिव्यू करना है उधर प्राइम टाइम में। राव साहब को बुलाते हैं, उनकी किताब पकड़ के बैठ जाते हैं बंदे, एंड पेजेस पढ़ना शुरू कर देता है। ये तो रिसाइटेशन हो गया, आपने ऐसा लिखा था, या आपने ये कविता ये लिखा था, तो ये तो परफॉर्मेंस हो गई, कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गई। हाँ, और इसकी क्लिप्स में दिखाता रहता है ये पेज में लिखा है, ये तो रिप्रोडक्शन हो गया, ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो गया। और गाना, आपने गाना लिखा है, उसका रिकॉर्डिंग हो चुका है, गाने का क्लिपिंग दिखा देता है, अगेन इट्स इन्फ्रिंजमेंट हो गया। नो, मेनी क्वेश्चंस विल कम, बट फॉर द प्रिंट मीडिया, ये प्रिंट भी हो गया, न्यूज़पेपर में, अमर उजाला में, मीरठ में आ गया, एंड यू सरप्राइज। अब फोटो तो लगा है हनुमंत राव साहब का, मगर उसमें कुछ एक्सट्रैक्ट्स भी निकाल के कुछ पेजेस को वो भी छप गया है, वो एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई दिस इज व्हाट ही रिटर्न, उसके ऊपर राइट अप भी है। राइट अप कौन लिखा है? विभोर साहब ने लिख दिया राइट अप। तो ये क्या हो गया अभी? कानून क्या बोलती है सेक्शन 52 कॉपीराइट में, देयर आर एक्सेप्शन फॉर द न्यूज एंड प्रिंट मीडिया, कॉपीराइट एक्सेप्शन, ये कर सकते हैं, परमिशन लेने का जरूरत नहीं है। तो ये इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, these guys are gone step forward। टेलीविजन वाले, टेलीविजन चैनल्स ने ये गलती कर बैठे, बहुत बड़ी गलती कर बैठे टेलीविजन चैनल्स। क्या गलती किया उन्होंने? उन्होंने ये किया कि व्हेन आईपीएल मैच आ रहा है, एंड एक इम्पोर्टेंट मैच है, उसमें द टॉप प्लेयर सेंचुरी ने मार दिया है, लास्ट बॉल में 20 रन करना है, सॉरी लास्ट ओवर में 20 रन करना है। सो हु हैज द लाइव टेलीकास्ट राइट्स? स्पोर्ट्स टेलीविजन चैनल ईएसपीएन स्पोर्ट्स में आईपीएल का लाइव आता है। ईएसपीएन स्पोर्ट्स वो ब्रॉडकास्टिंग लाइव दिखाने के लिए करोड़ ऑफ रुपीस टेंडर में नंबर 1 आके लिया है। उतना करोड़ ऑफ रुपीस, आपको चक्कर आ जाएगा भाई, इतना पैसा। बट वो कैसा कमाएगा? बाल बाल के बीच में एडवर्टाइजमेंट आते रहते हैं ना आपका दिमाग खाने के लिए, उसमें पैसा बनाता है। तो उनको पता है भाई, लोग पागलों की तरह वाचिंग दिस चैनल स्पोर्ट्स आईपीएल, बिकॉज ऑफ दैट आई बॉल्स वी कैन एडवर्टाइज आवर प्रोडक्ट्स एंड मेक देम बाय आवर प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए आईपीएल जो कमिटी बोलेगा, जो ब्रॉडकास्टिंग के साथ, भाई ईच एडवर्टाइजमेंट 3 सेकंड्स का एडवर्टाइजमेंट इतना लाख रुपए, यू नो दैट, लाखों रुपए होता है ईच, करोड़ों रुपए होता है एक एडवर्टाइजमेंट का। एंड ऐसा पैसा बना के वो प्रॉफिट में भी जाता है। लेट अस से दैट 1000 crore है द ESPN पेइंग, they will earn 20,000 crore maybe profit, but इसका लाइव न्यूज चैनल दिखा देगा, मैं न्यूज दिखा रहा हूं, क्या हो जाएगा? we all stop watching the ESPN sports, मैं एनडीटीवी और रिपब्लिक देखता रहूंगा, भाई सचिन का सेंचुरी है, विराट का सेंचुरी है, और बुमराह का हैट्रिक है बोल के। नो, न्यूज चैनल इज नॉट सपोज्ड टू डू दैट। व्हाट दे सपोज्ड टू डू, ए बॉल होगी, बैट्समैन मारेगा, बाउंड्री पार करेगा या कैच होगा, आउट होगा, आफ्टर दैट इवेंट ओनली वो क्लिपिंग दिखा सकता है, बिकॉज लाइव का राइट्स इनके पास नहीं है, इनको इतना दिखाने के एक्सेप्शन है। सो लाइट यू शुड नॉट, राइट्स आर देयर, यू शुड नॉट वायलेट दिस राइट। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट मैटर है। ESPN स्पोर्ट्स पर ग्लोबल ब्रॉडकास्ट की दिल्ली हाई कोर्ट की जजमेंट है, इसमें कहा गया। और एनडीटीवी ने और एक ऐसे लाइव दे दिया, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा, आईसीसी ने केस डाला था उसके ऊपर एनडीटीवी, हम दे सकते हैं, एक्सेप्शन है। तो कोर्ट ने बोला न भैया, आप इवेंट के बाद दिखा सकते हो वीडियो, लाइव नहीं दिखा सकते हो। एनडीटीवी केस हार गया। एंड स्टार इंडिया का और एक केस है, स्टार टीवी वाला। स्टार टीवी क्या किया, ये जो स्कोर है ना, वो वोडाफोन स्कोर
और some other product score बोल के Pepsi score बोल के दिखाता था. Then ICC बोला no 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 no, वो मेरा स्कोर आप कमर्शलाइज कैसे कर रहे हो? देन कोर्ट ने कहा अरे स्कोर इज इन द पब्लिक डोमेन. अब रास्ते में जाते जाते यू आस्क समबडी व्हाट इज द स्कोर, ही विल टेल यू आपका इन्फ्रिंज हो गया क्या कॉपीराइट. तो ऐसा बेवकूफी मत करना. सो इट इज हवा में है स्कोर नंबर, कितना रन किया है कोहली, बुमराह ने कितना विकेट लिया है, एवरीवन नोस. उसी को उन्होंने डाल के कमर्शलाइज कर रहा है तो कर सकते हैं. सिमिलरली वीडियो क्लिपिंग्स की केस आई स्टार इंडिया का और एक केस में. तो वीडियो क्लिपिंग्स वो व्हाट्सएप में एसएमएस में भेजते, तो इसके ऊपर नो हमारा क्लिपिंग है. ESPN स्टार स्पोर्ट्स ने कहा आप वीडियो निकाल के कैसे दे सकते हो? भाई ऑलरेडी सेंचुरी हो चुका है. आप स्मॉल 10 मिनट्स क्लिप बनाया, उसको बना के भेज रहे हो, नॉट इन्फ्रिंजिंग द कॉपीराइट, दैट इज द डिसीजन दिया. सो these are all the basic things the communication students know. So I'll just end my talk here. If you have any questions, you can ask. I think it was really very interesting session, sir. And NV Hanumantrao sir has raised his hand. I think he has some questions. Sir, you please, you can ask a question, sir. Go ahead. So thank you very much, sir. Are you getting me? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Please, sir. Record. Very nice to participate in your workshop. I think this is second time I am participated in your workshop. The first one was in 2013. Wow. Regarding the copyright of a book, I would like to ask you one clarity or question, whatever it may be. Recently, I worked for a book of an autobiography of an industrialist. Okay. The autobiography is written by an eminent writer in Hyderabad. Okay. Is actually we didn't put his name as writer. He has provided the words Aksharīkarana in Telugu we have mentioned. Yeah. Then while the publisher is himself, the original industrialist himself is the publisher. They have a foundation. They publish it their name, that autobiography. Okay, sir, you got it. Who will get the copyright on this book? So it is simple. The industrialist is there. It is his autobiography. Yeah. Let us say industrialist, his name is Mr. X. Okay. Yeah. So Mr. X has not written his autobiography. He has communicated his life stories to Mr. Y. Why? The author. Okay. So in copyright, there is an idea expression dichotomy. Person who is giving ideas already told you in the beginning. Yeah. Copyright. Even though no copyright. Entire story, life story. A childhood when I was in a village, my father was a poor farmer. And yeah, now from I childhood to till date. With difficulty I studied and I become a now industrialist. This is a story. Unless until he tells Mr. Y, he doesn't know what to write. Yeah. Still, all these are ideas only in a copyright. Finally, written by X, his language, his prose, his vocabulary, his expression. So copyright goes to him. But it all depends on the understanding between both of them, the story writer and storyteller. Both have an understanding that both are going to be joint authors, means there is a collaboration that both are recognized as authors. It's okay. If he is not recognized as the author, only storyteller, unko thanks bol diya story mein, yeah. And he must have written dedicated to him also, but finally monetize it by Y. But Y can monetize provided he has his own publication or is publishing self-publishing. No, he has given that to
published by wife's own company. Yeah. Yeah. Now, wife's own company is publishing it, but who gave the rights? Them publishing right, or a reproduction right or distribution right. Mr. Y must have written a contract. Okay, I have written this autobiography with the title of blah blah blah, and I'm transferring to these rights of publication, reproduction, and distribution of copies to access company. You have to see that contract, and in that contract, and what other rights have been transferred or kept by Mr. Y, we have to see whether he has transferred the translation rights. We have to see. Translation rights include from Telugu to English to Urdu to Hindi, Bengali, Kannada, Tamil, or French, German, all languages. So has he transferred only English language rights or all languages rights? Oh, that you have to see. Then comes adaptation. No, Let us say, let me complete. Tomorrow, this autobiography has become very famous. Okay. And Rajamouli approaches him, I will make a film. And Rajamouli has to take a permission from whom? From the author who still has adaptation rights? Or author Mr. Y blindly jaldibaji mein sign kar diya contract, adaptation rights are given to X company who's publishing the book. Then Rajamouli will go to its company, not to the author, because the author doesn't have a right of adaptation. So this you should know. Sir, it is mentioned in the book, all rights are reserved to some X. That X is the convener of the foundation. No, please don't buy the what is written in the book. That person must have written in the book, see in the circle, all right, with the X. Please ask Mr. Y, your friend, show me the legal contract copy, maybe signed on a stamped paper. Show me that. Based on that only, you will regain your rights or you will get a percentage of royalties. Otherwise, no one, it is possible to help it. There is no agreement on paper in this issue. Then I can't. That the rights are taken by the foundation. I'm telling everyone, Bhaiya, Bete, brothers, don't give your copyright except unless you sign a contract, legal contract. Whether it is a software you are innovating or a art piece you are innovating, anything. There is a twist or in a this book case you are also, writing, or an article you are writing, go for the publication, sign a contract. Okay? Sir, there is a twist in this autobiography. As you mentioned, the writer Y, he has taken the content of this autobiography, which is already written by him, is publishing another book with the same content by adding so many stories. No, that again, infringement. The person who is adding stories does have a copyright to do that. And again, here comes, it is the updated edition, adding new chapters, okay. But there is a right to integrity, which I have not told you. Author's name cannot be removed, that original book. Okay, that is right to paternity attribution. And the way that is written, the integrity, the way a paragraph written, chapter, that cannot be mutilated, distorted, or changed. And you can add more chapters, but in between you can insert something. So yes, again, thank you very much. That has a moral rights called perpetual rights. This cannot be transferable, or it is perpetual. It never ends. Okay, thank you. I think I got some other meeting. Thank you very much, sir. Thank you for inviting me, Jai Hind, and especially Dr. Subhash, who was in contact with me. Thank you, Mr. Subhash Taledi ji. I think, sir, there are some more few questions if we can take them. Yeah. Pardon? Sir, can you take a few more questions? Some students are writing some questions. Can you take them, sir, please? No, I can take one question because I have to go to some other meeting. Okay.
Sir, let I speak all the questions. Whichever you feel like, you can answer. One student, Chetan Chauhan, is asking how to get photography skill patent or photographs. Divya Ajay Jain is asking if I understand copyrights and the types of patent form etc. What is the future scope for me in this field? Shikha Tyagi is asking how important No, is it? I'll reply to one question. Photograph. The person who takes Okay, photograph is the author yes, of please. that, and the copyright subsisting. Mobile, there is a camera. Take a photo now. So person who is clicking the photo is the author of the photograph, and it is artistic work. And copyright is registration is not mandatory. The moment you have created work, copyright subsists in that. Yeah. But sir, if I am the subject and I am objecting that you cannot take a picture of mine, it's my right, then can I claim that somebody else is using my picture as his subject? Can I claim? I mean, in this No, particular case, your question is not clear to me. What are you asking? sir, as you said that you are the author, you are taking the picture, but Ah. I am being the subject or the model, and I am objecting that you cannot take picture of mine because it is in Yeah, my when you, for example, I give you the best example. Couple of years back, it's a popular story, and happened is a popular copyright case. The one of the Kardashian, her name is K Kardashian, and she and her boyfriend went for a dinner in the Paris restaurant, and obviously the paparazzi photographer journalist went there and took a photo. She happily gave a pose, means it is an implied consent. She didn't say, but don't take. And she allowed him to take. The person who clicks the photograph is author, and he started selling this photo to all the newspaper and film magazines. He made money. And the moment that became very popular, that photo, what? Her name is Kim Kardashian. What Kim Kardashian did, took that photo and posted on her Instagram account. Okay. And then immediately this fellow, the journalist who took her photo, sent a legal notice by my copyright, how you can infringe, you have to pay me this much of compensation. And she said, oh, come on, it's my photo. And in photo, you may be standing, but taken by me. And you have given consent to me, smiling, come on, take. That's enough to, it's implied consent given to Indian. You must have not written in a contract, not it given in a word. So similarly, when you don't give a consent, when many places photography is not allowed, it means not allowed. Okay. But you should know this. If somebody takes your photo, let us say many celebrities are available over internet, and then somebody puts on any manufacturing commercial good and start selling it, people will think that the popular actor is promoting that product. So without his permission, such illegal. Yeah. So thank you. Thanks a lot, Professor Subhash. I have to leave with your permission. thank you, sir. I will request our Dean, sir, Dr. Subhashan Taledi, sir, for a vote of thanks, sir. Dean, sir, Dr. Subhashan Taledi, sir, I will request you for vote of thanks. Dean, sir, I think you are muted. Please unmute yourself. Yes, I am available, Mr. Vibhor. Yes, sir. Sir, please, I request you for vote of thanks for this wonderful session headed by Raghavendra, sir. Yeah. Can I start, Vibhor? Yes, please, sir. Go ahead, sir. Okay. Good afternoon to you all, and my special thanks to our honorable chief guest, GR of my joint secretary. I am very, very thankful to you. You have given us time in a very short time, and I call you a very first time, and you accept my request. I am very, very thankful, dear Raghavendra sir. You are. I have I heard about you a lot, that you have mastery in this subject, and all about my friends. My one of friends connecting from Hyderabad, he is
great fan of you. He has already attended one workshop earlier. Mr. Hanumanta Rao might be in a National Academy of Broadcast, Multimedia Broadcasting in New Delhi. And today, this was a very wonderful and informative session for us. And I hope Joint Secretary Sir, G.R. Raghavendra Sir will give us some time after this month or next month. And I invite him to at my university premises, Meerut, very near to Delhi. You know, one hour only ride from Delhi. So I'd like to request him sometime. He should visit to our request. He should visit to our university. Sure, definitely. Thank you. And I am also grateful to all the participants who are patiently joining us for this workshop, 6 days workshop. Tomorrow is the 6th day and concluding day. Today was 5th day, and it was a very, very valuable day for us. I know that Joint Secretary level officer, a very big officer of the government of India, he is always busy, and after this you are so busy schedule, you join our session. Really, very, very grateful to you. I request to you all other participants that be connect with us for tomorrow and have a complete knowledge of this IPR workshop, which is organizing IIMT University Meerut. On behalf of my university, I am again thankful and grateful to Joint Secretary Sir, Mr. G.R. Raghavendra ji, who is Joint Secretary in Ministry of Justice and Ministry of Justice, Government of India. And I am also thankful to all our participants. Thank you, sir. Yeah, thank you, Professor Rao and Dr. Subhash and Mr. Vibhor.